So, hi, good evening, everyone. Hi, Simran ji. Good evening. Hi, Jasleen. Good evening. Zobia, why you were not there in the few classes? Hi, ma'am. Hi, how are you? You missed out few I'm classes, right? yes, madam. I was absent yesterday because I did not receive the notification. Is it? Yes, Why? ma'am. I don't know what's the reason, but they did not send me the notification. But what you can do is every day you can open up your app, right? And you know the timing is same. Yes, ma'am. But still, I forgot to Yes, join the class. Yeah. But right. then I watched the recorded classes. Okay, good, good. Great. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Raman. How are you? Good, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Who is this with the name of Good evening, ma'am. iPhone? Ma'am, Arsh. Arsh. Okay. Please change your name to Arsh. Arsh, are you joining this session for the first time? No, ma'am. Okay. So did you attend reading sessions before? No, ma'am. I attended writing sessions recorded. Okay, recorded. But these live sessions, I guess you're attending for the first time? No, ma'am. Actually, second time. Okay. So what was the last session you attended? Uh, ma'am, the session on Friday, I think. Last Friday. Last Friday, I guess there was no session. Okay, let's wait for 2 more minutes and then we will start. Arsh, when you have your exam? Ma'am, I have not booked an exam. Okay, so when are you planning to give? And planning for academic or general one? Ma'am, I am planning for academic. Okay, so this is your first time? Yes, ma'am. First. Okay. So any idea what we're gonna discuss today? What is the topic for today's session? Yes. How to achieve band 8 or 9 in speaking. Correct. So we're gonna talk about some tips that how you can score band 8 or 9 in your speaking test.
Okay, let Yes. me ask one by one each of you. What do you think are the most important things which you need to keep in mind when you're preparing for speaking test? Okay, what you can do is you can write all your answers in the chat box. You believe that yes, these are the most important part of speaking, and with this we can score higher and higher. Like in part 1, part 2, or part 3? Any Or speaking test, the complete speaking test, you can write how well you can score like band 8 or 9, you believe. yes, ma'am. Hmm. The lexical resources, yes, it is a parameter, but how you can score good with it, how you can score higher with lexical resources. Lexical resources होते क्या हैं? Your spellings are wrong, Arsh. Descriptive answers. Lexical resources, not lexicon, right? And grammar, A, not E. Okay, Jasleen? Okay, ma'am. Zobia, complex sentences, cohesive and coherent logical flow, basically. Grammar, idiomatic language. So, आज what we are going to discuss is we will discuss all the tips. हम वो सारी tips करने वाले हैं इस session में. According Yes. to, sorry, who's this? So we're gonna discuss about the tips for band 8 or 9. Whether what tips are required for part 1, part 2 and part 3. ठीक है? सारी tips हम करने वाले हैं. So now the most importantly top 5 IELTS speaking tips जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप practice करते हो. Now you know कि speaking test is one-on-one, है ना? It's a face-to-face interaction between examiner and the test taker. So you have to make it more sound natural because you're talking to a human, you're not talking to a computer. So imagine that you're talking to your friend, right? If you're gonna feel that yes, you're talking to a friend, you will be having less hesitation and you will be showing more fluency. Speaking is informal. Do not treat it like a formal exam going on. ये writing या reading या listening की तरह नहीं होता. This is more informal, casual talk, right? So what you are supposed to do, the very first thing is speak some English every day. ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको इंग्लिश बोलनी है. दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कि अगर आपके घर का एनवायरनमेंट नहीं है, that you're not able to speak English with anybody at home, कोई नहीं है आपके पास इंग्लिश बोलने के लिए, you try to answer in English. आपसे हिंदी में बोला जा रहा है, आप इंग्लिश में आंसर दो. और you can practice the IELTS speaking test in babycode application, है ना? वहां पे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, because Yes. application is designed like this so that you don't need anybody else, आपको किसी की जरूरत ना हो, right? Yes. एप्लीकेशन को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है कि आप आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड देन यू गोना आंसर इट, राइट? सो Yes, अगर ma'am. आप स्पीक करते हो इंग्लिश एवरी डे, ओनली देन यू कैन टारगेट योर स्कोर 7 और वो क्लास लग रही है. otherwise no, right? Otherwise you will be stick to only 6 or maximum 6.5. 7 can't be achieved if you're not a person who is speaking English every day, right? So it's Yes. better कि आप practice करो थोड़ी सी English every day, अपनी skills को improve करो, right? So that you can have a better score. Second tip is ask the examiner question if you don't understand. Now suppose अब आप examiner is asking you a question और अगर आपको वो question नहीं समझ आया, you can ask him to repeat or to little explain for you.
बिकॉज स्पीकिंग टेस्ट क्या है, इट्स अ नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. सो अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आया, एग्जामिनर से बोलो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट व्हाट इट मीन्स, or just say I am sorry, could you explain what does this means, right? Okay. So you can also ask them to repeat the question for you, right? But you cannot ask the examiner to explain the whole sentence for you. But yes, sometimes you can ask them about a word. Okay. Next is do a 24-hour English warm up. Now, what is a 24-hour English warm up? A 24-hour English warm up means that try to speak in English. 10 to 15 minutes का वार्म अप करो, परफॉर्म बेस्ट करो अपना टेस्ट डे पे. जैसे एथलीट्स वार्म अप करते हैं ना स्पोर्ट्स के टाइम पे, or either when you go for your exercise or aerobic classes and then you do, before starting the exercise you do a warm up, right? So you Yes, ma'am. also need to warm up before your IELTS exam. आप स्पीक करो, रीड करो, राइट करो, लिसन करो इंग्लिश को 24 आवर्स बिफोर योर स्पीकिंग टेस्ट. हमारा एग्जाम होता है नेक्स्ट डे, वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग. रीडिंग का मॉक टेस्ट करते हैं, लिसनिंग का मॉक टेस्ट करते हैं, राइटिंग का मॉक टेस्ट करते हैं. ऐसे इंग्लिश को बोलो, सुनो, लिखो, राइट करो, एनी यू वांट. सब चीजें यू हैव टू डू 24 आवर्स बिफोर योर स्पीकिंग टेस्ट, right? Next is give full answers. Yes and no are not satisfactory answers. आपको सिर्फ yes and no में आंसर नहीं देना. स्पीकिंग टेस्ट में you have to expand your answers in your speaking test. You need to show the examiner कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है when you will speak. So you have to elaborate more, you have to expand your answers more. अगर आप शॉर्ट आंसर्स दोगे, देयर इज नो वे कि एग्जामिनर को समझ आए कि आप कितने अच्छे हो अपने इंग्लिश में. सो ट्राई कि आप एक्सटेंड करो अपने आंसर्स को विद योर ओपिनियंस, विद योर एग्जांपल्स, विद योर आइडियाज. Okay, so always give full extended answer, expand your answers. Next thing is correct your mistakes. Now everybody makes small mistakes when they speak all the time because we are not robots, right? Especially when we are nervous. So when you have a test or when you are feeling nervous, it's obvious that you're gonna make some mistakes, some minor errors. Correcting your mistakes as you make them can show the examiner कि आपको पता है कैसे उसको correct करना है. अगर आपने कोई grammatical error करा, बोला, and then you are correcting it, it means कि आपको वो correct करना आता है और examiner को ये चीज show हो रही है कि you know about grammar, आपको grammar के बारे में पता है. You're making a sentence incorrect and then you're correcting it. So when you make small mistakes, say sorry and repeat the sentence correctly. Okay? Yes, ma'am. Now these were the tips for part 1. Now let's look at some part 2 tips, especially when you have your cue card. How to prepare for cue card. Okay, before starting this cue card, I want you to give one cue card. Wait. Okay, so I'm giving you a cue card topic, right? I'm writing here in the chat box.
And everybody, after I send this cue card, you have only 1 minute to talk about it. Like you have to prepare in 1 minute, and next 2 minutes will be about speaking. So you have to describe a person you know who likes to talk a lot. You should say, who is this person who is this person? What does he or she likes? Ma'am, Yes. or she likes means like her appearance. What does he? I'm sending in the chat box. First, read from the chat box the entire cue card, then plan for it. Okay. Now read the entire cue card topic. Describe a person you know who likes to talk a lot. Are you able to see in the chat box? Yes, ma'am. Describe a person you know who likes to talk a lot. You should say, who is this person? What does he or she like to talk about? How do you know him or her? And explain how you feel about this person. So you have 1 minute. After 1 minute, you have to talk about it for 2 minutes. Okay? Okay, I'm gonna help you in this. Okay. So Yes, first ma'am. is the first question says, now what you are supposed to do here is you have to talk about the topic. That is the most important thing. And topic kya hai? Describe a person you know who likes to talk a lot. जिसको ज्यादा बात करना पसंद है उस पर्सन को आपको डिस्क्राइब करना है. तो आप किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हो जिसको ज्यादा बोलना पसंद है. राइट. यू शुड से, अब यहाँ पे यू शुड से दिया, दैट मीन्स आप इन बुलेट पॉइंट्स का हेल्प ले सकते हो टू क्रिएट योर स्टोरी. अदरवाइज दीज आर नॉट मैंडेटरी बट दीज आर देयर टू हेल्प यू. कि कौन है वो पर्सन, हु इज दिस पर्सन. सो हु इज दिस पर्सन मीन्स आप उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पे कि आप किसके बारे में बात करने वाले हो. राइट. So it can be your friend, it can be your family, or it can be an unknown person for you, right? Where you're having a formal relationship. Then next is, what does he or she like to talk about? So अब आपको बताना है कि टॉपिक्स क्या हैं, किसके बारे में बात करना पसंद है, सब्जेक्ट्स क्या है, क्या डिस्कस करता है वो पर्सन. राइट. तो वो डिटेल बतानी है, कौन सा उनका इंटरेस्ट है, उनकी टॉकिंग पॉइंट्स क्या है. So you're going to talk about some phrases also here. How do you know him or her? कैसे जानते हो आप उसको? अपना relation straight forward है, specific है, कैसा है? You're going to talk about it.
Then next question is explain how you feel about this person. So आपको कैसा लगता है इस person के बारे में? तो आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स, अपने इम्प्रेशंस उस पर्सन के नेचर से रिलेटेड कि वो इतना टॉकेटिव है, राइट? आप उसको एडमायर करते हो, आप इंजॉय करते हो उसके साथ बात करना. You have to talk about it. Okay, let's see who gonna start first. Yes? Anybody who wants to take initiative and want to speak about it? Ma'am, can I? Uh, Jyoti here. Jyoti. Okay, Jyoti, you can start. I'm starting the Yes, timer. Just wait. yes, yes, ma'am. Yes. Please, everybody mute yourself. Everybody mute yourself. Yes, Jyoti, start. I'm going to describe a person who talk more in your daily life. Also, in my life, there are many people who I know they are talkative in a life of they want to talk, they love to talk everyone. So I'm going to describe a person who I'm going to describe a person who more in my life. So in the person is my senior is Dr. Anil Tiwari. He is a scientist in my office. He is always love to talk more and more. So I love to his way uh, where where he express yourself himself and he always talk others like he always talk others um, like they know a very long time if they meet a new person in their life. So I like their way to talk. So Sorry and to say, in but there are so many pauses, right? You're taking so many pauses in between. Anybody else? Yes, ma'am. Okay, Gagan. yes, Gagan, you can try now. Okay. There are many persons who Wait. are Let me start the timer. Now speak. okay. There are many persons who are talking more, but here I would like to talk about my cousin sister. She is very lovely and she is a chatterbox. Whenever she have many stories about their daily life and she give me some good stories, and whenever I feel bored she give me a lot of stories about their school days, and some are related to their daily life. And I love to spend time with her because of she whenever we are meet our time is passed out and we feel no both are not feeling bored. So that is a person whom I like to talk with, and she is very talkative person. So you spoke for only 55 seconds, not 1 minute complete. Still left with 5 more seconds to complete 1 minute. And sometimes you speak like you have learned something and then you are speaking. Not natural. है ना? Yes, ma'am. So work on your fluency part. Anybody else? Ma'am, Can I speak, ma'am? Arsh? Who's this who was saying ma'am? Ma'am, Jasleen. Okay, Jasleen. Yes, start. Well, there are numerous toxic people whom I know in my life. However, today I would like to talk about the most toxic person. She is my best friend, Navdeep Kaur. We studied together since primary school to secondary school. She is just a 19-year-old and doing his graduation nowadays. He is very handsome as well as very tall. Moving further, she has a lot of energy and
She can speak continuously for hours. She is also good in acting and singing. Singing. Uh, she is good in writing skills. She Not is good. only Why pronunciation is incorrect? She is good. है ना? she is good. प्रोनाउंसिएशन भी तो आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इवैल्यूएट होने वाला है फ्लुएंसी के साथ. Okay, तो ma'am. इफ यू गोना स्पीक, ऐसे क्यों बोलते हो कि आप लोगों ने कुछ लर्न कर रखा है वो बोल रहे हो? No, be very confident when you are speaking. It's a conversation going on with an examiner, right? So make it more natural. आप उनको बता रहे हो अपनी फ्रेंड के बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में, जो भी बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, राइट? सो मेक इट मोर Yes. नेचुरल. Yes, love, do you want to start? Yes, ma'am. Okay, start. Well, there are many persons whom I know who talks a lot, and today I want to talk about my friend whose name is Rahul. As Rahul, me and Rahul studied together in same school. He is good at nature and he is a very obedient person. He always love to spend a time on social media, and he generally talk about political as well as international news. And new yeah, there is a new in a country there if a new car is launched, so they like to talk about new cars. And I like to spend time with Rahul because he always helped me in every situation, as well as when we were in school he also helped me lots of time in my studies. And I know Rahul, as I earlier mentioned, that he is my classmate since my childhood. I know the I know this person, and all in all, this was a person who talks to me. Okay, now see, if you think that you are not able to speak for, like, you cannot create your own ideas with the topic, then you can make a use of the bullet points. Unka use karo. Okay, let me discuss this. First question was, how do you know this person, or who is this person? Who is this person, right? So I would like to talk about my close friend, ABC, or I would like to talk about my cousin sister. We have known each other since college days, since school days, and our friendship has grown stronger. Or you can talk about, I would like to talk about an individual in my family who stand out for their talkative nature. This person, we call them as ABC, जो भी उसका नाम है, is someone I have known for quite some time, or I have known for years. तब से मैं उसको जानता हूँ, क्योंकि वो person है कौन, आप पहले उसको introduce कर रहे हो. और आप ऐसे भी start कर सकते हो, let me introduce you to my talkative person whose name is this, or my best friend this. He's not an average person, he's an enthusiastic talker. है ना? कैसे आप उससे मिले वो स्टोरी बताओ. We met at book club because we both are avid readers. हम क्या हैं? Avid readers हैं. We share our literal adventures. हम एक साथ पढ़ाई करते हैं. Then first question was this. Second was, how do you know him or her? कैसे जानते हो? यूनिवर्सिटी में मिले थे, और same course में you were enrolled. We both were enrolled in the same course. And our friendship goes on increasing because we have shared same interest and we have a similar sense of humor. थोड़ा vocabulary को add करेंगे तभी तो score मिलेगा ना. अगर वही basic line 2-3 repeat करते जाएंगे, how we gonna have better score? हम 6 पे ही stuck रहेंगे ना. 7 तो हम achieve ही नहीं कर पाएंगे. Okay. Now let's talk about some of the part 2 tips की बात करते हैं कि part 2 के लिए आपको कौन कौन सी tips चाहिए. First is, as I told you, you don't have to talk about every bullet point. ये mandatory नहीं है कि आपको सारे points को cover करना है. Points are only there to help you.
अगर आपके पास आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आप पॉइंट्स का यूज करो सो दैट आप ईच क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। पॉइंट्स के थ्रू आप क्या करो, अपने आंसर को फ्रेम करो, राइट। मार्किंग क्राइटेरिया भी जो है स्पीकिंग टेस्ट का, वहां पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको एवरी बुलेट पॉइंट के बारे में बात करनी है। लॉट्स ऑफ एग्जामिनर नोज दिस बट वो बताते नहीं है, राइट। बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप टॉपिक से रिलेटेड बोल सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास आइडियाज नहीं है, देन मेक श्योर कि आप यूज करो बुलेट पॉइंट्स का, क्योंकि आपको हमेशा जनरल टॉपिक दिया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट एंड देन फॉलोड बाय 3-4 बुलेट पॉइंट्स। सो ये जनरल टॉपिक है ना कि यू हैव टू टॉक अबाउट अ टॉकेटिव पर्सन, जिसको बात करना बहुत पसंद। वहां पे हमेशा क्या लिखा होता है, यू शुड से, नॉट यू मस्ट से। सो दिस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। बुलेट पॉइंट सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। सो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट देम, प्लीज डू। However, if there are one or two जो आपको नहीं पसंद, आपको लगता है you are not comfortable talking about, leave करो, talk about something else. But it is related to the general topic, जो आपका topic है. Try to add some vocabulary. Second is have a strategy. Now have a strategy means this only, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 मिनट में जब आप यूटिलाइज करते हो टाइम को, वो कैसे यूटिलाइज करते हो। मैंने जब क्यू कार्ड का सेशन कराया था, आई हैव शोड यू कि आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, कि वो पर्सन कौन है, रिलेशन कैसा है उसके साथ। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर लो 1 मिनट में क्विकली। जब प्रिपेयर कर रहे हो घर पे, मेक अ हैबिट 2 मिनट्स के साथ प्रिपेयर करो, बस उस टाइम को रिड्यूस करके 1 पे लेकर आओ, राइट। सो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाओ, बिकॉज एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्ट्रैटेजी, सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, राइट। Next is preparation. Now practice. Don't memorize answers because कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स के आंसर मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने मेमोराइज कर रखे हैं। सो डोंट मेमोराइज आंसर, नेचुरल आंसर दो प्लीज। फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो आप, कैसे आंसर देते हो, डोंट ट्रीट इट लाइक एन एग्जाम। टू मेनी टॉपिक्स है आपके लिए, आप किस किस को मेमोराइज करोगे, नॉट पॉसिबल। सेम टॉपिक एग्जाम में आया ही नहीं तो क्या करोगे, राइट। जस्ट टेक हेल्प। सैंपल आंसर्स आपको इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं जस्ट टू हेल्प यू, नॉट फॉर लर्निंग पार्ट। लर्न के लिए नहीं, मेमोराइज करने के लिए नहीं, राइट। सो इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। और आप वहां जाके अगर आपने जो लर्न किया होगा वो तो आप बहुत क्विकली बोल दोगे, बट इन केस यू गॉट समथिंग एल्स, तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपने वो मेमोराइज किया हुआ, राइट। एंड यू विल नॉट गेट एनी स्कोर फॉर दैट, आपको कोई हायर स्कोर नहीं मिलने वाला। फोकस करो अपनी फ्लुएंसी पे एंड प्रोनाउंसिएशन पे। रिकॉर्ड करो अपने आंसर को, जब भी टेस्ट देते हो तब भी उसको दोबारा सुनो कि आपने क्या बोला था। सेल्फ इवैल्यूएशन करो, आपको पता चलेगा आपने कहाँ पे गलत प्रोनाउंस किया है, राइट। लाइक अ स्टूडेंट सेड गुड, गुड, नो, गुड, राइट। नेक्स्ट इज यू, यस, yes Jasleen. No, ma'am. Okay, you have to use your 1 minute wisely. ये 1 मिनट बहुत क्रूशल है, इसमें आपको प्लानिंग करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फुल सेंटेंसेस को लिखो, ठीक है। यू कैन ओनली राइट योर कीवर्ड्स, सिर्फ अपने कीवर्ड्स लिख सकते हो, एब्रीविएशंस लिख सकते हो, जो आपको हेल्प आउट करने वाले हैं नेक्स्ट 2 मिनट्स में। आप उनको देखो एंड देन स्पीक अबाउट इट। सम स्टूडेंट्स, उनकी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, वो 1 मिनट में इतना ज्यादा यूटिलाइज भी नहीं करते टाइम, बट दे कीप ऑन स्पीकिंग फॉर 2 मिनट्स। सो मेक योर स्ट्रैटेजी कि आपको क्या बोलना है नेक्स्ट 2 मिनट्स में, राइट। पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर ओके, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर बेस्ट, बट टेलिंग अ लाई इज ओके टू। नाउ एज आई टोल्ड यू, एग्जामिनर डजंट बॉदर अबाउट कि आप उनको सच बता रहे हो कि झूठ बता रहे हो, उनको नहीं पता, दे डोंट नो यू पर्सनली। तो आप यहाँ पे फेक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो, बट यू शुड बी गुड एट इट, है ना। अगर स्टोरी बना रहे हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए,
क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस हम जल्दी से बता पाते हैं, स्टोरी क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो बेस्ट आंसर्स वो होते हैं जो आपने खुद एक्सपीरियंस करे अपनी लाइफ में, आप उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हो मोर डिटेल मैनर में, और कोहेरेंटली उसके बारे में बात कर पाते हो क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस करा है ना। बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो ना अपने रियल एक्सपीरियंस को बताते हुए, और आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन भी उसमें शो होती है। बट सम ऑफ द क्यू कार्ड विल आस्क यू टू टॉक अबाउट द थिंग्स जो आपने एक्सपीरियंस नहीं करी अपनी एंटायर लाइफ में, राइट। तो इट्स फाइन कि अगर आप उसके बारे में लाई भी करते हो, राइट। एग्जामिनर विल नेवर चेक योर आंसर्स और वरी अबाउट कि आपने सच बोला कि झूठ बोला, राइट। दे मे आस्क यू सम फॉलो अप क्वेश्चंस आल्सो, बट ये है कि हाँ, आपका जो क्यू का टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके पास फॉलो अप क्वेश्चंस आएंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना रियल एक्सपीरियंस पहले शेयर करो, तब जाके उसमें कुछ लाए को ऐड करो, ताकि आपका एक वेल एक्सटेंडेड आंसर मिल जाए। इमेजिन करो बट स्पीक अबाउट इट, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शो करना है एग्जामिनर के सामने, राइट। दीज आर ऑल जनरल टॉपिक्स। नेक्स्ट इज एक्सपैंड योर आइडियाज। नाउ इट इज मच बेटर कि आप फुल्ली एक्सपैंड करो ईच मेन आइडिया को, जो भी आप डिस्कस करने वाले हो, देन टू सिंपली स्टेट लॉट्स ऑफ मेन आइडियाज, और वो डेवलप ही ना हो, ऑर्गेनाइज ही ना हो, ठीक है। अगर आप ईच मेन आइडिया को एक्सप्रेस करते हो तो आपका आंसर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, एंड इट इज ऑल्सो बेटर यूज ऑफ टाइम, और इजियर भी हो जाता है आपके लिए सोचना रेलेवेंट आइडियाज को और उनको डेवलप करना, देन टू थिंक अबाउट लॉट्स ऑफ डिफरेंट आइडियाज। अब वन थिंग हियर इज, आप यहाँ पे टू टॉकेटिव पर्सन के बारे में भी बात कर सकते हो। डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु लाइक्स टू टॉक अलाउड। आप यहाँ पे दो की भी बात करोगे तब भी एग्जामिनर विल नॉट से एनीथिंग कि आपने दो के बारे में क्यों बताया, राइट। सो यू कैन टॉक अबाउट टू पर्सन, उनको सिर्फ आपके आंसर में आपकी ग्रामर, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी और आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज को चेक करना है। दे विल नेवर से कि आपने टू पर्सन क्यों बताए, टॉकेटिव वन क्यों नहीं बताया। सो यू कैन टॉक अबाउट टू पर्सन, आपको एक्सपैंड करना है अपने आइडिया को, राइट। So whenever you are practicing, the good way to expand your idea is to use who, what, why, where, how. WH question को आंसर करो, इससे आपको क्विकली और इजीली आप डेवलप कर पाओगे अपने आइडियाज को, और यूज टू हो जाओगे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स के लिए भी कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, कौन से टेंसेस यूज करने हैं, कौन से सेंटेंसेस यूज करने हैं। Try to frame some complex sentence, compound sentence, simple sentences also. Different wide range of vocabulary का यूज करो if you want to score 7. इस स्पीच के साथ you can score 6, but 7 नहीं स्कोर हो पाएगा। 7 के लिए you have to think about wide range of vocabulary, right? So expand your vocabulary, advanced vocabulary का यूज करो। बकरे का सामना कर रहा है कहीं बनाने। Now, as I said, mistakes are okay, right? Everyone make mistakes. Grammar में, vocabulary में mistakes होती है. Even when we record videos, it takes time, है ना? क्योंकि mistakes हो जाती है. So even students जिनको band 8 और 9 मिला है, वो भी small mistakes करते हैं. But आपको this is totally understandable. आपको panic नहीं करना जब भी आप mistake करते हो. Next sentence को correct करो grammatically, right? बट नॉट एवरी टाइम। अगर आप हर दूसरे सेंटेंस के बाद मिस्टेक करके उसको करेक्ट करोगे, देन दैट मीन्स यू डोंट हैव फ्लुएंसी, आपकी ग्रामर करेक्ट ही नहीं है। माइनर एरर्स अवॉइड हो जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर ऑल्सो नो दैट वी आर नॉट रोबोट्स। माइनर एरर अवॉइड हो जाते हैं ग्रामेटिकली, बट अगर आप हर 2 से 3 सेंटेंस के बाद वही सेम एरर करोगे, लाइक फर्स्ट वन वाज ज्योति ने बहुत सारे एरर करे थे, बहुत सारे पॉजेस लिए थे। सो दिस कांट बी एवरी टाइम, है ना, उसको हम एवरी टाइम नहीं कर सकते।
अगर आप नर्वस हो, स्ट्रेस हो, आपके आइडियाज इफेक्ट होंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इफेक्ट होगी। आप ये सोच के चलो कि वो एग्जामिनर नहीं है आपके सामने, आपके फ्रेंड है। आप उनको अपनी स्टोरी बता रहे हो कि आप एक पर्सन को जानते हो जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, तो कैसे बताओगे, राइट? ऑलवेज सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, डू नॉट टर्न ऑफ योर कैमराज। मैं तभी बोलती हूँ स्पीकिंग में अपना कैमरा टर्न ऑफ नहीं रखो, टर्न ऑन करके बोलो कैमरे को, सो दैट फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाए। Let's talk about any doubts in part 2 now. Please tell me any doubt in Q card topic. No, ma'am. No, ma'am. But you have to practice. Practice is required. Yes. All we need is a practice. Yes, all we need is practice, because practice gonna make you perfect. Speaking एक ऐसी है स्किल जो कभी भी आपको 5, 7 या 10 डेज में नहीं आती. If you want to score 7 or above, if your background is not English, then you have to work hard on it. Let's look at part 3 tips. Don't try to finish quickly. अब ये नहीं कि पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, तो पार्ट 3 में आपने शॉर्ट आंसर दे दिया और आप क्विकली उसे फिनिश करो. नो, आई नो कि आप 15 मिनट्स के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे हो, बिकॉज आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश. इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, राइट, द फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी. मे बी आप बहुत स्ट्रेस रहे होगे, आपने रात को टेस्ट डे से पहले आपने नींद नहीं करी होगी, एग्जॉस्टेड होगी आपकी बॉडी, बिकॉज यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर सेवरल डेज और सेवरल मंथ्स. बट दिस इज द टाइम, ये 15 मिनट्स ही आपका स्कोर सेट करने वाले हैं. सो मेक श्योर आप इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहो एंड यू टॉक एज मच एज यू कैन. लॉट्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पार्ट 3 में आके शॉर्ट आंसर्स देना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उनको ये होता है कि अब टेस्ट ओवर हो जाए, राइट? नो दैट एग्जामिनर विल कीप ऑन आस्किंग यू क्वेश्चन. हो सकता है नेक्स्ट वन डिफिकल्ट भी हो, सो इट्स बेटर कि आप फुल आंसर दो, अपनी पूरी एबिलिटी दिखाओ, बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. शॉर्ट आंसर देके और उसको एंड करके क्विकली, you will not get your score. एग्जामिनर अपने 15 मिनट्स पूरे यूटिलाइज करेंगे. अगर आप शॉर्ट में आंसर दोगे, they gonna ask you next question again, है ना? दूसरा क्वेश्चन भी तो पूछेंगे वो. ऐसा तो नहीं कि 7 मिनट्स में आपका टेस्ट ओवर कर देंगे वो. नो, दे कांट. जो उनकी स्क्रिप्ट है वो सारी वो आपसे पूछने वाले हैं. So don't try to finish quickly. Know that examiners are trying to stretch you. Examiner आपको stretch करते हैं यहाँ पे. Part 1 एक warm up है आपका. Part 2 monologue है. Monologue means only one person will talk. That means you, क्योंकि Q card में सिर्फ आपको बोलना है, examiner को नहीं बोलना. बस Part 3 is the chance जहाँ पे examiner आपको टेस्ट करने वाले हैं और आपको stretch करने वाले हैं कि आपकी language abilities क्या हैं. So the main thing जो आपको remember करनी है, that they will ask you questions, you won't be able to answer. ये थोड़े से difficult questions होते हैं, right? So they will often increase the difficulty. Difficulty level part 1, part 2 और part 3 keeps on increasing. So it is the best way कि वो आपकी knowledge को यहाँ पे check कर रहे हैं. Knowledge कौन सी? Grammar की और आपकी vocabulary की. That means आपके 4 parameters की. राइट? सो थिंक अबाउट कि जब पर्सनल ट्रेनर या एथलीट्स कोच होते हैं, वो फोर्स करते हैं ना एथलीट को कि परफॉर्म करो, राइट, एक्सरसाइजेस को, ताकि वो जज कर पाए कि कौन सा ट्रेनर बेस्ट है, राइट, कौन सा एथलीट बेस्ट है. सो सेम इज स्पीकिंग. यहाँ पे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं बार बार, ताकि आपकी एबिलिटी को इवैल्यूएट कर पाए कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स कितनी अच्छी है. 6 के अकॉर्डिंग है, 6.5 के, या 6 या 7 के अकॉर्डिंग, राइट? सो अगर ऐसा हो रहा है एग्जाम में, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं मोर कॉन्फिडेंटली. एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, आंसर दो इन अ कॉन्फिडेंट वे. डू नॉट हेजिटेट. It's gonna, okay, ask me next one, I'm gonna answer it, right? Don't be afraid to ask questions.
So there will be words in some questions जो आपको नहीं समझ आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप डर जाओ कि नहीं how I'm gonna ask this, ऐसा नहीं. You can ask the examiner कि इस particular word का meaning क्या था. You can also ask them to repeat the question. आप repeat करने के लिए भी बोल सकते हो, but not every time, right? Always give an answer. So suppose आपको part 3 में कोई ऐसा question है जिसका आपको आंसर नहीं आता, अब आप क्या करोगे? There will be at least one question जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आप क्या आंसर करो. So don't worry, this is normal. See point number 1. The most important thing to do is to at least make an attempt. Right? आपको कुछ भी बोलना है. Try to speak. That I have never came across such type of question. I have no idea how to answer this question. बोलो. At least 2 sentences बोलो. यही बोलो कि मुझे नहीं पता इसका आंसर, कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं. Right? The worst thing is कि सबसे बुरी चीज क्या है कि आप उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे. राइट? अगर आपका ये माइंडसेट रहेगा, देन दे वोंट बी एबल टू गिव यू स्कोर. एंड ट्रस्ट मी, एग्जामिनर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं. आई हैव सीन सेवरल टाइम्स जब एग्जामिनर आपकी हेल्प करते हैं, आपको समटाइम्स दे इवन गिव यू हिंट्स कि आप इस चीज के बारे में बात करो, बिकॉज दे वांट टू चेक योर एबिलिटी. जब तक आप बोलोगे नहीं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसे इवैल्यूएट होंगे. राइट? सो इट इज फाइन अगर आप ये बोलते हो कि आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट इफ आई हैड टू आंसर आई वुड से दिस. सो दैट मीन्स आपने कुछ तो बोला. राइट? एग्जामिनर विल बी हैप्पियर कि आपने अटेम्प्ट करा आंसर को, रादर देन जस्ट सेइंग आई डोंट नो और ब्लैंक लुक दे दिया कि हमें कुछ आता ही नहीं है. So do not give that blank look. You can give yourself time to think about the question. That's a difficult question. Just give me a second to think about that. I have never thought about that. To be honest, give me a moment. Right? So आप ऐसे भी अपने आंसर को मोल्ड कर सकते हो. Think about what structure the examiner is testing. Now examiner need to know that you are capable of using wide range of structures, है ना? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी भी दिखानी है, वाइड रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी दिखाने हैं. सो डोंट वरी अबाउट इंसर्टिंग एज मेनी एज स्ट्रक्चर्स, because they will ask you specific questions to test your grammar. Let's look this. See this. So question can be, how have mobile phone changed the types of relationships people make? तो ये आपका क्वेश्चन है अगर पार्ट 3 का. हाउ हैव मोबाइल फोन चेंज द टाइप्स ऑफ रिलेशन पीपल मेक. सो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताने हैं पहले के और अब के. सो पास्ट एंड प्रेजेंट आपके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे यूज होंगे और आपको ओपिनियन भी बताना है. सेकेंड इज, सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू यूज मोबाइल्स. डू यू एग्री? आपको अगेन अपना ओपिनियन देना है यहाँ पे. How has mobile phone use changed in the last 10 years? So कितना चेंज हुआ है? अगेन पास्ट टू प्रेजेंट आपको बताना है कि 10 साल पहले और अब क्या चेंज है. How will mobile phone change in future? अब फ्यूचर की प्रिडिक्शन करनी है आपको. If you could add any new feature to a smartphone, what it would be? Hypothetical है ना? आपको इमेजिन करके बताना है कि आप कौन सा फीचर ऐड कर सकते हो स्मार्टफोन. राइट? So when you know कि examiner is trying to test you, you can give them what they want. तो उनको वो आंसर दो. पार्ट 3 के क्वेश्चंस you can check all in our babycode application. सारे क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल है. राइट? So there are many ways जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. The most important things are कि आप प्रैक्टिस करो on your own, then not to practice at all. आप सोचो कि प्रैक्टिस नहीं करोगे और स्कोर हो जाएगा, that can't. That is why we provide you multiple tests application पे, और वो सारे फोकस किस पे करते हैं? मेन मार्किंग क्राइटेरिया पे. सो एक रिफ्लेक्टिव लर्नर बनो, रिकॉर्ड करो अपना एंड सबमिट योर आंसर्स. Now any doubt, please let me know.
Yes, Sobia. Any doubt in speaking part? Ma'am, no doubt. Yes. We need only practice. Yes. Now, what you need to do is you need to practice here. Yes, ma'am. Tomorrow, we're going to talk about some do's and don'ts, right? कि क्या do's है speaking के और क्या don'ts है speaking के, right? But okay, who's attending this session for the first time? Anybody here who is attending this session for first time? Yes, Arsh. So Arsh, are you attending Yes, this? ma'am. Who's this? Shailendra. Shailendra Kumar. Okay. So what you Yes. can do is you can go to the application and start doing the speaking test. Tomorrow you have to show me that Okay, how many ma'am. tests you people have done. It's for Okay, ma'am. everybody. It's for everybody here. I want you to do at least 3 speaking tests. You have 24 hours, right? Tomorrow I'm gonna ask you that how Yes, much ma'am. score you achieved, right? Go to the application. Yes, ma'am. Do you have all membership? The membership Yes. of Yes, ma'am. okay. Yes, Then you yes, can do yes. multiple tests. Then show me the score tomorrow. I want to see that how much you are improving. Okay. Okay, You ma'am. can even rewatch this session. आप इस सेशन को दोबारा भी देख सकते हो एप्लीकेशन में भी और यूट्यूब में भी. So whenever you see this session, you can do the star rating. आप star rating भी दे सकते हो, feedback भी, comments भी. कोई queries है, so you can write it here, and I'm gonna reply. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, so yes. So newcomers, if they have any doubt, they can ask me. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Nobody? Okay, then we're gonna meet tomorrow. Bye. Take care, all of you. But do Bye, ma'am. practice Thank you, ma'am. for your Thank you, speaking ma'am. test. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.